AHEC, knowing nothing about lakes. The population of Dal has increased in such a way that the carrying capacity जितनी डल को है, it does not इससे तजावुज कर गया है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं आज की मुलाकात के और एक शुमारे में। नाजरीन, रोजमर्रा हम आपसे कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर MRD कुंदनगर। आपको बता दें, जो कुंदनगर साहब हैं ये डल वुलर जैसी वाटर बॉडी जो कश्मीर की हैं उनकी तह से वाकिफ हैं, उनके पूरे काम से वाकिफ हैं, उनके पूरे बदलने से वाकिफ हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे सर से हम। मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का। MRD कुंदनगर क्या है? MRD पहली बार सुना है मैंने। ये एक्चुअली एब्रीवेशन है मेरे पूरे नाम का, मोहम्मद रशीदुद्दीन कुंदनगर। तो नाम है मोहम्मद रशीदुद्दीन, क्योंकि अब ये बहुत लंबा सा खींचता है तो इसलिए इसको एब्रीवेशन करने में मुझे आसानी होती है और लोग भी समझ जाते हैं। तो एंड पीपल नो मी बाय दिस MRD कुंदनगर, और इन साउथ दे टेल मी MRD कुंदनगर। डल लेक, वुलर लेक जो दो मेजर लेक्स हैं, अभी नासा की एक रिपोर्ट आई है कुछ महीने पहले जहां दिखाया गया है कि दोनों लेक श्रिंक हो रही हैं। ये लेक्स पहले कैसी थी और कैसे बदली, ये कहानी आप हमें बताएं कि वक्त के साथ साथ चेंज कैसे होने लगी। देखिए, मुझे डल से वाबस्ता जो साइंटिफिक मॉनिटरिंग से जुड़ा हूँ तो मेरे 50 साल हो गए। तो डेट मीन्स अ हाफ सेंचुरी। आई एम अ लिविंग विटनेस ऑफ चेंजेस इन डल लेक जो हुई हैं पिछले 50 साल की, जिनमें अपनी बात करूँगा। 1846 में मोंटिंगमरी का जो मैप आया है डल में, डल के मुतालिक, उसमें आप देखेंगे कि एक किनारा जो पानी का था वो कोए सुलेमान जिसे हम कहते हैं, और व्हाट वी कॉल एज देन कोई मारान है दूसरी तरफ से, हारी पर्वत या सुलेमान का जो पहाड़ी है। आप देखेंगे कि पूरा पानी कितने वहाँ से वहाँ तक पूरा फैला हुआ था। तो जो आप देखेंगे कि इसके मुल्क का जो पेरिफेरीज पे जितने जो गांव हैं वो आप देखेंगे कि उनको जो किनारे जो हैं वो खुद दिखा रहे हैं कि वो किस एलिवेशन पर हैं और डल किस एलिवेशन पर है। तो इसका मतलब है कि इट वाज रियली 50 किलोमीटर्स स्क्वायर, देन 25 स्क्वायर किलोमीटर्स इट वाज डेफिनेटली देयर। तो धीरे धीरे जो एनक्रोचमेंट्स हो गई, लैंड यूज पैटर्न्स चेंज हो गए, ये सुकड़ता गया एंड एनक्रोचमेंट स्टिल देयर ऑन। तो इस वजह से तो डल डेफिनेटली इट हैज सिक्योर्ड। 1846 से फिर 1911 का आपका मैप देख लीजिए, देखिए कितनी रिडक्शन हुई है। देन यू टेक मैप्स ऑफ टुडेज मैप्स, इट विल डेफिनेटली शो द रिडक्शन। अब ये नासा ने जो कहा तेजी से हो रहा है, दैट विल बी बिकॉज उसके लिए नासा की क्या बात है हम देख रहे हैं कि अगर आप छोटे बच्चे हैं, सिर्फ आज से 75 से पहले डल की पोजीशन डिफरेंट थी। देयर वाज नो मशरूमिंग ऑफ होटल्स नोवेयर, देयर वर नो हैबिटेशंस। जो सेटलमेंट्स आई हैं ये 75 के बाद आ गई है। ओनली 30-40 years back it was not like that. Then the pressure on Dal Lake has increased. What we call anthropogenic pressures have increased tremendously. It is, I think, 300-400 times more what was happening before 70s. So naturally, squeezing of Dal Lake is there, and it is going on still in the form of land transformations, in the form of habitations, and all that. All the pressures are on Dal Lake. So eventually it has its own effects, which is in result of a pollution of the Dal Lake. That is the main crux of what has happened to Dal Lake, or what is happening.
So we know that Dal सिर्फ एक लेक नहीं है, it's an economy in itself, it's a state in itself. Dal has economy, Dal has habitation, Dal has people living in it. So वक्त के साथ साथ जैसे कि आपने अभी बताया कि डल चेंज हो रहा है, तो कुछ बॉडीज भी बनाई गई हैं जो डल का ख्याल रखती हैं, अगर हम बताएं उन्हें पालती हैं, जैसे LCMA, जैसे इससे पहले लावड़ा कहते थे, या ये बॉडीज जो हैं इससे पहले, इन बॉडीज के बनने से पहले, हाउ वाज डल मैनेज्ड एंड हाउ डिड दीज बॉडीज कम इनटू प्लेस? Dal is unique in the world. How it is unique? Firstly, that it is a liquid gem very much in the heart of Srinagar. Right. Number one. Second, जो इसका जो it has become an important tourist center, focus of tourism. Right. तो tourism का हमारा जो main thrust है वो because of Dal Lake है. Second important thing is houseboats in Dal Lake. We don't have houseboats. We may have cruises and all that in other, may have seen in Western countries there are cruises, but no houseboats. Houseboats कैसे आए, that is another story. But houseboats, having houseboat in a lake, in a water body, is itself a uniqueness. होगी दो. तीसरी चीज जो है, about 90,000 people living within the Dal Lake, in the islands, what we call as hamlets. So scientifically, and I also hold the same opinion that they are the part and parcel of the ecosystem. जो डल लेक का एक ecosystem है, Dal rivers are the part of the ecosystem. Now one thing is there, of course, that the population of Dal has increased in such a way that the carrying capacity जितनी Dal को है, it does not इससे तजावुज़ कर गया है. So eventually again it is another thrust on the Dal Lake itself, all the Dal Lake environment. अब जो आपने ये बात कही कि इससे पहले क्या था, the engineering department it was looking after it, that was called as UEE department, Urban Environmental Engineering Department. The conservation plans whatsoever they were done by the Urban Engineering Department, though it was engineering dominated. Dal was looked after by engineers, but all the works were done by, that is civil engineering. Nothing for the water body itself. It was not an environmental engineering, it was simple engineering. So which resulted what happened, that on one hand the pressures on Dal Lake due to habitation, due to land use patterns, due to encroachments, and mainly due to what we call as sewage, which created havoc to Dal Lake. It resulted in the pollution of Dal Lake, which was manifested for the first time in August 1990 in the form of red algal bloom. तो जब red algal bloom आ गया Dal में, तो everybody was scared. The conditions those days were not favorable. There was uprising in the state. Curfew was all over. I was not knowing, though I was dealing with the Wular Lake at that time through hydrobiology laboratory of SP College. We were monitoring the other water bodies of Kashmir, preferably Dal Lake, this Wular Lake under Ministry of Environment's project. So one fine day we were told that the Dal waters have turned red, blood red. It was August 1990. I don't know, we were told later that some samples had been taken to Jammu University, and then somebody from South India was called a scientist by the government at that time to see what is the cause of this red bloom. They had given their own versions. When we were told to see this organism, we said that it is a microorganism which is known as Igluinide bloom, which turns red during the sunlight and turns green in the shade. So ultimately we were the first to identify correctly the organism responsible for the red bloom. So eventually the government at that time assigned us the job of monitoring the Dal Lake under the supervision of the UED sponsored. So we got connected, hydrobiology laboratory got connected with the UED in terms of monitoring the Dal Lake and see the causes of the red bloom and how to check it. So later on we came to the conclusion that when this organism, it is because of the release of nitrates
umbilical nitrate, especially nitrogen from the lake bottom, and which is the causing this euglonite bloom. And finally, we also had one bloom, similar bloom of what we call as a microscopic bloom in what we call as the upper lake Bhopal. Japanese had put the floating aerators to check the microscopic bloom. So eventually we came to Srinagar, me and one of my engineers from the UED, we installed a homemade aerator to check, and then we started monitoring it, and it gave us the results that the oxygenation of the lowered down the nitrate phosphate, and result what happened that it was checked. And later on the successive governments, then they recommended these floating, what we say as floating, these are basically the floating aerators, which are now known as, they have made it fountains, rather colored fountains, but it is not a fountain basically. These are the basically aerators which are checking the bloom. And those stagnant parts where there have been excessive DVD, it again comes up as a bloom in a different types of. It is not a red bloom is at one time. This time I am telling you that Dal is under bloom. The greenish, the lush green waters are nothing but they are the under algal bloom, which is known as microcystis bloom, which is more toxic to the human beings if we take scientifically. So, but what are the causes is again the mismanagement, not following the scientific advices. That is the result of these blooms. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप डल के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हैं, आप काफ़ी कुछ जानते हैं, अब आज भी डल के साथ आप किसी न किसी तरह इंडायरेक्टली जुड़े हैं, वो अब आगे बात करेंगे। लेकिन दिलचस्पी कैसी आई, मतलब लोग चलें देख लें, मतलब सहाफ़त में आना चाहते हैं, जानने के लिए लोग किसी और जगह जाना चाहते हैं, किसी और के लिए, ये वाटर बॉडीज़ में कैसे दिलचस्पी आई आपकी, आप खुद कैसे जाना चाहते हैं? ये बाई चॉइस था या बाई चांस? Yes, this is a very pertinent question. After having my MSc in botany and specialization in general ecology, there was one famous and eminent scientist, I should say, Dr. Shailendra Mohan Das. He was head of the department of zoology, Kashmir University. It was at that time J&K University. So after having my MSc, I had an interaction with Dr. Das. He took me in a project. It was a project under PL 480, American project, sponsored by USA, on organic production in lakes of Kashmir. He called me as a botanist to see what is the flora of these lakes. So there were zoologists, mostly fisheries people, zoology people, and I was the only man from botany department who was engaged with. Nobody was knowing the word limnology, to tell you very frankly. Even professors of botany at that time did not know what is limnology. Limnology is basically the science of lakes. Nobody was knowing. It was only Dr. Das who introduced this subject in Kashmir University, and he, at that time he said, in limnology we must have a botanist, we must have a zoologist, we must have a history man, we must have a geography man. That is limnology. So I was associated with that project and became a research scholar, a junior research scholar at that time. Later on I got my interest to have my work as a PhD topic for my PhD. Again on what we call a phytoplankton Dal, that microscopic flora of Dal Lake, to study it. But somehow for continuing for Dr. Das retired, and I got disinterested, and eventually I became a lecturer. I preferred to be a government job rather to doing research at that time. But later on, that research bug was in my mind. It compelled me to
pursue my search. But at that time, I left this Dal Lake because it has been taken by other people also, other scholars from zoology department, from botany department. I switched over to rural lakes. I chose two lakes which were unexplored at that time, Hansar and Voskasar. And my thesis was on those two lakes. Yes. So it was because of that your HOD कि आपने Yes, of course, yes. हमने एक कहानी सुनी है, कहीं से सुनी है मैंने, अब मैं कंफर्म करना चाहूँगा सच है कि नहीं। आप सफाई की वजह से, मतलब साफ रखने की कोशिश की वजह से जेल भी गए हैं, ये किस हद तक सच है? मुझे याद है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो टीचर्स होते हैं उनका अपना एक प्रिंसिपल होता है। आई एम ए टीचर बेसिकली, and being a scientist and having a responsibility of, I cannot or what should I say, I should not and I cannot afford to be a dishonest man. In the sense, the controversy started with the sewerage treatment plants in Dal Lake. As director of newly developed LADA, by the way, I am one of the co-founders of this LADA जो अथॉरिटी बनी, इसकी अलग कहानी मैं बताऊंगा आपको। बट इन द मीन टाइम आपने बीच में सवाल पूछा कि आई वॉज अगेंस्ट हैविंग दीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो इन्होंने बनाए लगाए हैं। एज डायरेक्टर आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, the technology, because of the reason, the simple reason is that these are these sewerage treatment plants which work on bacteria. So these bacteria, these are fab technology which works on bacteria. These bacteria, they decompose the organic matter and then make it free from nitrate and phosphate, right? But these bacteria, under our Kashmir conditions, when there is temperature -4, -1, -3, they get deactivated. So what is the fun of having that technology which will not work for 3 months, 4 months? So on that basis, I did not accept the technology. So it became a point of controversy between me and the government, not the vice chairman at that time. It was directly the political, I should not, what was chairman of the authority at that time, who unfortunately was chief minister. So it became a controversial point. I did not budge, I did not. So ultimately I agreed to be a part of it, one STP at Hazratbal, okay, but it be on 50-50 basis. 50% LADA will bear, 50% will be borne by the company itself. If it works, we will go for 5 and we will be paying 100%. This was my opinion on it. Is on the file I have written. Okay, if it works to our satisfaction, especially reducing nitrate and phosphate from the wastewaters, I will agree. We will do it. It did not digest to the company because they had already had a deal. I don't know. So there was only a way to remove me. So I was very confident I will be back to my own education department. Okay. No, they said he should be also tasuna Kashmir bokchi karun. Dub khe nasa imis kariyo bokchi. Bokchi kya karuk? A case for engineers had एक साल पहले एक उनका केस था डीवीडी के बारे में। उसी में एक लाइन लगी, डॉक्टर MRD कुंदनगर भी साजिश में शामिल था, वन वर्ड। नो गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, no mention in other any evidences, other thing. Yet the case was, I was put there and was put in behind bars for 24 hours. तो just for, तो अब जब कोर्ट की बारी आई तो हमने कहा क्या है ये, कहा कि this man has been a part of dividing. मैंने कहा यार my job is to monitor the impact of dividing on Dal Lake. सीधी सी बात है,
आप देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कि डिवीडिंग हो रही है, डिवीडिंग पहले भी हो रही थी, 30 साल पहले भी हो रही थी, बट इट इज ऑल इरेटिक, अनसाइंटिफिक. वी डोंट नो. द रिकमेंडेशन फ्रॉम 1970 एनेक्स इज सिलेक्टिव डिवीडिंग. इसके बाद जितने भी ये प्लान्स आगे उनके जो लिखे, उनका जो लिखा हुआ, दैट इज नो अगेन रिपीटिंग सिलेक्टिव डिवीडिंग. Selective means that we have not to go and mass dividing. We have to see where there is a density. अब हमारा काम क्या है? We would see first of all what is the density of the weed in different parts of the lake. What is the frequency of the weed in different parts of the lake? Then would we recommend you do 50% dividing here, 60% dividing here, 30% dividing in this part of the lake. And I was monitoring, my job was to see the impact. What is the impact of 30% DVD on the Dal Lake water quality? What is the impact of 50% and 70%? Right? In this melee, they prosecuted me. I am the unique, rather I have made a history in the scientific community that I was prosecuted for making the environmental impact on the Dal Lake due to DVD. That was the. It took me then 5 years in the court to clear our position. Not me and my scholars with me, most of them girl students, scholars rather at that time. And ultimately it was also, the Vigilance Department got very nasty remarks by the Honorable Court, saying that this is not done with the scientists. This is not a real thing. And the word is that they owe an apology to the Vigilance Department. चलिए, मतलब कंफर्म हो गया आप जेल गए सफाई की वजह से. डल को साफ रखने की कोशिश में. तो पुरानी बातें तो हो गई. आजकल नया कश्मीर है, बोल रहे हैं बदल रहा है कश्मीर. डल काफ़ी जो है वो बोल रहे साफ़ हो रहा था, लेकिन अगर हम आज भी डल के किनारे किनारे से चल दें तो आधे से ज़्यादा जगह पे हमें वही रेड एल्गे ब्लूम दिखाई देगा, या हमें वो ग्रीन एल्गे दिखाई देगा उसके ऊपर, या हमें डल का वो पानी जो है वो वैसा पानी नहीं रहा जो देखने लायक है, जो शायद बैठने लायक है वहाँ पे. तो डल प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है, बोल रहे हैं डल प्रोजेक्ट है, अब काफ़ी वक्त से चल रहा है, इसकी सफाई हो रही है. ये डल प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ, क्या वजूहात थे उसके पीछे, और अभी कितना आगे पहुंच गया है? यही बेटे मैं बताऊंगा आपको कि मेरे से पहले, आज से 50 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ. व्हेन आई वाज ऑन स्टूडेंट, डिफरेंट टीम्स आएगी फॉरेन से भी. इसमें सबसे जो लेटेस्ट था somewhere in 70s में what was annex. तो उनने एक कंजर्वेशन प्लान दिया था जे के गवर्नमेंट को. वो दैट इज द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन प्लान स्टार्टेड फॉर डल लेक, राइट. बट समहाउ इसी के तहत जो अर्बन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ने ऑन दैट लाइन्स, तो लेकिन उसकी फंडिंग नहीं हुई. जो पैसा आया था, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इट वाज ऑल इंजीनियरिंग. नथिंग हैपनिंग टू द वाटर बॉडी, इट रिमेन्ड एज इट वाज. Instead, the pressure on Dal Lake went unabated due to habitation, due to mushrooming of hotels, other things which I told you earlier. So ultimately, somewhere in 1995-96, जो हम काम करते गए इस दल में, साइंस डिफरेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स में काम करते, लाइमलाइट में आ गया डल की हालत तो ठीक नहीं हो रही है, ये तो ख़राब ही हो रहा है. तो जब ये अलगल ब्लूम आ गया तो इसमें बड़ा तहलका मचा पूरे मीडिया में. आए दिन डल के बारे में स्टोरियाँ निकलती थी, फीडबैक्स हमारे होते साइंटिफिक. ऑन दैट बेसिस डल केम टू द लाइमलाइट and the government of India at that time became very serious. In 1990s? After 1990s. After 1990s. So ultimately, one fine day, the government of India
अंडर नेशनल लेक्स कंजर्वेशन प्रोग्राम NLCP के अंडर उन्होंने 11 लेक्स आइडेंटिफाई किए पूरी कंट्री में which needs conservation. So Dal Lake was number one. I was studying with UED at that time through SP College because monitoring मेरे हाथ scientific inputs मेरे थे, soil conservation वाले soil conservation काम कर रहे थे, forest वाले अपना काम कर रहे थे, but under UED sponsored. So what happened? Me and one of my associates from engineering department, Aijaz Rasool, we were called to Delhi and were told to come up with a comprehensive conservation plan so that we can have a funding for this. Fortunately, Sosa was the, if I remember, he was the Union Environment Minister. So naturally, Dal was having more impetus. We prepared a conservation plan, Aijaz Rasool and myself together, because he had a vast experience in UED as an ex-junior. Me had a lot of scientific inputs from 90 onwards. So we compiled the project report and put it to Minister of Environment through government of J&K, of course. They said, no, it is to be submitted through a consultant who is internationally accepted environmental expert. So one IRM consultants from Delhi was appointed as consultant. We gave him all the inputs again. The same thing which we had put, plus some maps and etc. he had added. It was basically the same. Data was same, inputs were the same, only the format was different with a very good international seal on it of the consultancy. So they were approved as consultants. So, but the government of India put a condition that we will be funding under National Lakes Conservation Plan only when there will be an independent authority, lake authority, which will work as an umbrella under which a scientist, an engineer, both mechanical and civil, forest man, revenue man, all will work under one umbrella and it will be looked after by one executive officer. So eventually LADA came to existence. Lakes and Waterways Development Authority for J&K, Loktak Authority for Manipur, and Bhopal also have authorities. So 11 authorities came into existence. And unfortunately, it is the only LADA who has failed. Rest are working nicely and they are doing very good job. So what happened? I was from SP College. I was deputed to Lake Authority. The newly formed, I became the co-founder of the Director or Research and Development for LADA. Under a proper chalked out plan, the work started. A token amount of 5 crores were provided by the government to start with. In the meantime, the project was 296 crores. I am talking of 1996. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दल में सब पैसा खा गए, करोड़ों रुपया आ गया. हकीकत क्या है? 296 करोड़ का जो 1996 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम देंगे, 2006 तक नहीं दिया. टोकन अमाउंट 5 इसमें गवर्नमेंट चेंज हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में, थिंग्स वेंट. तो फिर क्या हुआ? पैसे कुछ नहीं है, वही 5 करोड़ या 10 करोड़ आए होंगे. 296 बार बार टीवी पर आप देखेंगे 300 करोड़ दल को, 300 करोड़ रिपीटेड. एंड
आइडिया वॉज गिवन दैट इफ जब 300 रिपीटेडली कहा गया, 96 में भी, 97 में भी, 98 में भी, 300 ये बन गए 1200 करोड़। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज इन द सेंटर, then with the change of the government, what happened, that they said that we will not allow this consultancy, we will have our own consultancy from government of India. Became another controversy. The chief minister was not agreeing, my vice chairman was not agreeing, minister was that time housing minister was the chairman of the authority. They did not agree, but ultimately they said nothing doing. You will get money only if you will accept our consultants. So came into existence a consultancy. Unfortunately, again misnomer. Everybody was being told that it is the University of Roorkee, which is the consultants. But basically it was not University of Roorkee, it was a department known as Hydroelectric Energy Department. Imagine, Alternate Hydroelectric Engineering Department, AHEC, knowing nothing about lakes, nowhere, nothing, no basis, yet they were put, thrusted rather, उनको थ्रस्ट किया हम ऊपर। तो मेरे साथ अगेन मैंने कहा कि यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं है आपकी कंसल्टेंसी में। दे हायर्ड माय ओन टीचर, दे हायर्ड हिम एज एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के लिए, बट बेसिकली दे आर नॉट द कंसल्टेंट, कुछ भी नहीं। उनने क्या किया, वही जो इरम वाला का था उसी को इधर उधर करके, एंड उसकी जो ये स्कोप थी, अगर वो 296 का पहले था उसी को रिड्यूस करके 200 कर दिया और 150 करोड़ कर दिया अंडर द इंस्ट्रक्शंस। तो बाद में मुझे पता चला कि बिकॉज ऑफ द प्रोक्सिमिटी ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अल्टरनेट विद सेक्रेटरी ऑफ दिस मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ही वॉज पुट एज कंसल्टेंट। उन्हीं के माध्यम से, ऑन देयर रिकमेंडेशन आ गया वजूद में एक कंपनी जिसको ये टेक्नोलॉजी जो एसटीपी की है, उनकी वजह से ही वो अगेन ठोस दिया गया, जिसमें मैंने कहा कि मेरी कंट्रोवर्सी हो गई। इसके बाद मैं चला गया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि सीएजी रिपोर्ट क्या है। आई वॉज मॉनिटरिंग, ये बात है कि ये सच है कि मैं लाडा से अलग होके भी मॉनिटर कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए से एसटीपी की वर्किंग का। और इसमें मैंने एक रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में ये छाप दिया, पब्लिश किया कि दीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग नाइट फॉस्फेट दे आर इंक्रीजिंग फॉस्फेट्स। उसका क्या हुआ डाल पर असर, वीडिंग कैसे वीड बढ़ गए, कैसे पुरुष हो गया। मैंने एक ये पेपर पब्लिश कर दिया। इसके बाद सीएजी का रिपोर्ट आ गया 2 साल के बाद, उसमें भी नेगेटिव रिपोर्ट आ गया अगेंस्ट ये एसटीपी के बारे में, दे आर माल फंक्शनिंग। तो इसके बाद आपको पता है, इसके बाद ये हाई कोर्ट में दल को लेगी अंडर पीआईएल। अब उन्होंने भी 10 साल के बाद कन्फर्म किया, हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज, उन्हें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं और से ला के कहा कि दे आर माल फंक्शनिंग। जो मैंने 20 साल पहले बात की थी, 10 साल पहले, ये फंक्शन नहीं करेंगे। 35 करोड़ रुपया खर्च करके आज इसकी हालत क्या है, दे हैव एडिड द पोल्यूशन टू डल लेक। ये 35 करोड़ रुपया भी बर्बाद। उनको नहीं पूछते हैं कि भाई ये 35 करोड़ रुपया आपने नुकसान किया और इससे जो डल में नुकसान हो गया इकोलॉजिकली, नोबडी, कोई जवाब दे नहीं है। अब जब हमने ये बात की, हाई कोर्ट ने ऑगमेंटेशन की, अभी तक नहीं हो रही है। मैं आज के दिन भी मैं कह रहा हूँ कि जो नुकसान डल को 25 साल नहीं हुआ, वो इन 2-3 सालों में एसटीपी की फंक्शनों की वजह से सीधा ये जाता है किसमें,
अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, अब जो इसमें जो गन निकलती है ना सीवेज की, जो जब ट्रीटमेंट के बाद जो निकलता है, उसको कहीं और डालना हो, कहीं खाद के तौर, बट दे आर पुटिंग इन द पेरिफेरी ऑफ डल लेक. देयर आर एविडेंसेस, प्रूफ है हमारे पास कि लाडा की गाड़ियां जो एलसीएम अब कहते हैं, इसी की गाड़ियां जो हैं वो उनको डल की पेरिफेरी में डालते हैं. एंड जब भी बारिश आती है या बर्फ होगी तो फिर लीच करके डल में वापस चले जाएगा. सो आप ये बता रहे हैं कि डल, तो हम अगर बेसिकली हम देखें पूरा ये सर्कल देखें हम 90s का, उसके बाद 2000 का, फिर 10, फिर अभी 23 चल रहा है, तो इसी सर्कल में हम देखें तो डल डैमेज ही ले रहा है, डल धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है. अब डल ख़त्म तो हो रहा है, तो इसको बचाएं कैसे? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज. देखिए बेटा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया. जितनी बातें हमने की, जितना रुपया इसमें लगा, मैं किस हद तक ठीक हूँ, अपने लिए कोई और क्या कहेगा, लेकिन असली बात जो है, ये जो इतने पैसा खर्च हो गया, या आप देखते हैं ब्यूटिफिकेशन अराउंड है डल की, क्या क्या बनाया है, ये सिर्फ किस लिए किया था? पानी के लिए, वाटर बॉडी के लिए. लेकिन वाटर बॉडी का अगर मैं आज भी आपको दे दूंगा, 1990 की पोजीशन वाटर क्वालिटी की, 2000 की पोजीशन, 2010 की पोजीशन, 2020 की पोजीशन, 2024 की पोजीशन, आप देखेंगे खुद इसमें डेटोरेशन कहाँ से कैसी, ऐसे ऐसे ये चढ़ गया है, डेटोरेशन बढ़ती ही गई है. इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड. जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्च करते हैं या कर रहे हैं, इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, इट हैज़ डिटोरेटेड. सो दैट इज अ क्लियर कट प्रूफ दैट वी हैव फेल्ड. वी हैव फेल्ड. जो मैंने कोशिश की है, जो मैंने किया है, जो मेरे दोस्तों ने किया है, चाहे वो इंजीनियर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव, वी हैव फेल्ड बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू कंजर्व द वाटर बॉडी. जिस पानी के लिए हम कह रहे थे ना ये ठीक, बाकी ये जो आए ये पॉलिटिकल स्लोगन है, प्रेस्टीन ग्लोरी, दैट इज नॉट पॉसिबल. नहीं मुमकिन है. क्यों नहीं मुमकिन है? कि इतनी मशरूमिंग ऑफ होटल्स हैं, वो हम उखाड़ सकते हैं. कैन वी गो बैक? कैन वी रिवर्ट बैक? नो. अब जितना बचा है उसको कंजर्व करने की जरूरत है. बट इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोजेक्ट. ये मैं आज भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है. इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट. इट इज़ टू बी टेकन एज अ साइंटिफिक ऑन साइंटिफिक बेसिस, विच इज़ नॉट बीइंग डन. अजीब तमाशा है. लाडा में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक विंग बनाई थी, R&D डिवीजन. R&D डिवीजन बनाया था, जिसका आप देखेंगे कि उसमें हमने एनुअल रिपोर्ट्स लिखे थे हर बेसिन की. वाटर क्वालिटी क्या, इस महीने क्या है, अगले महीने में क्या, इस साल में क्या क्या है, कौन कौन सा पैरामीटर इंप्रूव हो गया, कौन सा खराब हो गया. टेक्निकल रिपोर्ट्स निकलते थे और ये कैमरा में नहीं थे. इट वुड गो टू एक्सपर्ट्स. वहाँ से कमेंट्स आते थे. दे वुड गिव अस सजेशंस, इस पैरामीटर को ठीक करने में आपको क्या करना है. प्रॉपर साइंटिफिक एक विंग थी और उसी को अब मॉडिफाई किया है. उस साइंटिफिक में एक असिस्टेंट इंजीनियर को रखा है ऊपर. दैट टू इज अंडर इंजीनियर, वेदर में भी इंजीनियर, जिस बेचारे को ABC नहीं पता है, वो साइंटिफिक विंग का हेड है. वो इट इज़ अनफॉर्चुनेट. कहीं नहीं है. किसी अथॉरिटी में आप देखिए, हर एक अथॉरिटी जो मैंने की है, चाहे लोकटक अथॉरिटी है और अथॉरिटी जो बनी है, वो दे आर फ्लोरिशिंग लाइक एनीथिंग. अनफॉर्चुनेटली हमने इस लेबोरेटरी को इंटरनेशनल लेवल तक लाया था, लाडे की लेबोरेटरी को. हमने, एक अजीब बात है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ने हमें कहा कि हम 90% आपको एड देंगे. यू मेक दिस लेबोरेटरी इनटू अ नेशनल एक्वेटिक इंस्टीट्यूट. ये प्लान जो हमारे पास था, टू हैव नेशनल एक्वेटिक इंस्टीट्यूट, एन इंस्टीट्यूट ऑफ लेक साइंसेस.
as good as we have in Austria. ऑस्ट्रिया वहाँ कॉमनवेल्थ के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिनोलॉजी है. ऑस्ट्रिया में इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिनोलॉजी है, where all the managers, lake managers are trained from different countries, especially from Commonwealth countries. We had a plan कि जो सार्क की countries हैं उसी पैटर्न पर हम यहाँ नेशनल एक्वेटिक इंस्टीट्यूट बनाएंगे. ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने 90% ग्रांट्स अप्रूव किए थे कि हम 90% आपको टेक्निकल दे देंगे, टेक्निकल एडवाइस भी. इस सिलसिले में हमारे अपनी जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट थी, दे हैड ऑल्सो एग्रीड. एंड यू विल इमेजिन 500 कनाल हमने रखे थे वहाँ डल के जो क्या है गुलशन गौशिया, 500 कनाल हमने एयर मार्क किए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ. उसका एक प्लान भी बनाया था, ब्लू प्रिंट, विच हैज़ बीन अप्रूव्ड, विच वाज अप्रूव्ड बाय ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट, अगेन डिरेल्ड. इसके बदले उस मॉनिटरिंग R&D को इतना नीचे रिड्यूस करके एक मॉनिटरिंग सेल बना दी, विदाउट एनी हेड एंड हेडेड बाय एन इंजीनियर हु डज नॉट नो ABC ऑफ लेक. उसने पॉन्ड नहीं देखा है. जो आजकल के आप इंजीनियर जो हैं एट द हेल्म, आई एम श्योर उन्होंने कभी पॉन्ड में काम नहीं किया है. दे कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉन्ड एंड अ लेक, नॉट टू टॉक ऑफ अदर थिंग्स. They are at the helm of affairs. And unfortunate, during these last 3 years, I am witnessing tremendous type of breaking record of encroachments, unabated. So, otherwise, जो आपका क्वेश्चन है कि development should not be conserved. Now, how? My personal experience is that it should be first of all left free of politics. Dal is politicized. Let me tell you very frankly. कभी और एक साहब आते हैं, कोई एक जमात आती है, कोई एक लीडर आता है, कोई एक VIP आता है, इसको डिवीडिंग करनी है, वो भी नेहरू पार्क के इर्द गिर्द. हमने देखे कि पिछले गर्मियों के मौसम में डिफरेंट एजेंसीज आ गई, डिफरेंट NGOs आ गए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए, हर एक ने जितना से खलन करी, डिवीडिंग हो गई भाई, अब डाल के सफाई. तो अल्टीमेटली वन फाइन डे इट अपीयर्ड इनटू अ blue lush green bloom of microcystis which is toxic and then followed by ignite blue. ये उसी का नतीजा है. बिकॉज आवर साइंटिफिक वर्क जो हमने काम किया है उसमें हमने ये अक्स किया है कि 100% डिवीडिंग जहाँ होगी वहाँ यही ब्लूम ही आएंगे. क्यों? रीज़न क्या है? जो ये हमारे एक्वेटिक वीड्स है, दे आर बाइंडिंग दी नाइट्रेट एंड फॉस्फेट. जो भी जाता है ना, जो अभी मैंने कहा कि इतना जो पानी जो गंद आती है डल में, चाहे ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, it is being bound by the roots of the aquatic plants. They act as pollutant sinks for their own growth. ये उनको मिलती है ना ग़िज़ा, nitrogen and phosphate. So you will see tremendous weed growth. So they bind these pollutants, nitrogen and phosphate especially. When you remove them totally, they get nitrogen and phosphate gets released from this lake sediment, lake bottom से, and it is a very good nourishment for these blooms, चाहे ignite bloom हो, micro bloom हो, or other algal blooms, and eventually the water becomes toxic. सो ख़त्म में इस सवाल से करना चाहूँगा कि कश्मीर में एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शवना इशमियान गुनहन नतीजे. जो आपने कहानियाँ बताई उससे पता चलता है शायद साइन गुनहन हुंदी योत नतीजे कि डल इज पॉलिटिसाइज्ड, देयर इज पॉलिटिक्स इनसाइड डल व्हिच हैज डिस्ट्रॉयड इट, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट. थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.